बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। क्लास फिफ्थ की इंग्लिश की किताब के पहले यूनिट एनार्फन्स ईद की एक्सरसाइज के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस एक्सरसाइज का पहला सवाल चूंकि साइलेंट लेटर्स पर है तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं। इन तीन अल्फाज को गौर से देखिए। थम, नो, राइट। थम में बी, नो में के और राइट में जी साइलेंट है। Silent letters are spelled in a word but not pronounced. यानी एक लफ्ज़ में साइलेंट लेटर्स स्पेल तो होते हैं, उनकी स्पेलिंग तो होती है, लेकिन वो प्रोनाउंस नहीं होते। Oral communication, phonics practice, silent letters. Pronounce and practice the following sample words with silent letters. यानी नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको प्रोनाउंस करें और उनकी प्रैक्टिस करें। ये ऐसे अल्फाज हैं कि इनमें साइलेंट लेटर्स है। यहाँ पे 4 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में एल साइलेंट है, दूसरे में डी, तीसरे में जी और चौथे कॉलम में टी साइलेंट है। टॉक, काफ, चाक, हाफ, इनमें एल साइलेंट है। सैंडविच, हैंडसम, एज, ब्रेज, इनमें डी साइलेंट है। साइन, लाइट, अलाइन, दो, इनमें जी साइलेंट है। कैसल, फासन, नेसल, मैच, इन अल्फाज में टी साइलेंट है। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड प्रोनाउंस द वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स। अब नीचे जो जुमले दिए गए हैं उन जुमलों को पढ़िए और उनमें जो साइलेंट लेटर्स वाले अल्फाज हैं उनको भी पढ़िए। उमर कट द एप्पल इन हाफ। हाफ साइलेंट क्या है? एल। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। लाइट में जी साइलेंट है। द टाउन इज फेमस फॉर इट्स ओल्ड कैसल। कैसल एल साइलेंट है। रबीहा इज बिजी मेकिंग सैंडविचेस इन द किचन। सैंडविचेस में डी। राइट 3 words for each silent letter given in the table. Also use these words in your sentences. नीचे 4 कॉलम दिए गए हैं और 4 लेटर्स दिए गए हैं। ऐसे 3-3 अल्फाज तलाश करके लिखिए जिनमें एल, डी, जी और टी साइलेंट हो। एल, काफ, वॉक, टॉक। द काउ लव्स हर यंग काफ। काफ गाय के बच्चे को कहते हैं। वॉक, आई वॉक्ड डेली। टॉक, आई टॉक टू माई फ्रेंड। डी, जज, he is a good judge. Bridge, we crossed the bridge. Knowledge, he has good knowledge. G, sight, he was out of sight. Foreign, I love foreign dishes. Light, the sun gives light. T, listen, listen to me. Whistle, he whistled in the class. Wrestle, we wrestled in. Listening and speaking. Read and practice the given dialogue. नीचे दिए गए डायलॉग को पढ़िए और इस पर प्रैक्टिस करें। उमर, अस्सलाम वालेकुम एहतिशाम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम एहतिशाम, आप कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन थैंक यू, एंड यू? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, और आप? आई एम फाइन टू, बट व्हाई आर यू ऑलवेज लेट फॉर स्कूल? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन तुम हमेशा स्कूल लेट क्यों आते हो? इट इज़ नॉट गुड टू मेक इट अ हैबिट टू बी लेट फॉर स्कूल। ये अच्छी बात नहीं है कि आप स्कूल लेट आने को आदत बना लो। यू आर राइट, तुम ठीक कहते हो। आई ऑलवेज ट्राई टू कम ऑन टाइम। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वक्त पर आऊँ, बट आई कैंट मैनेज इट। लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाता। वट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? सुबह तुम किस टाइम उठते हो? आई यूजुअली गेट अप फ्रॉम बेड एट अराउंड 7 o'clock. मैं सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास बेड से उठता हूँ। मैं सुबह 7 बजे के आसपास बेड से उठता हूँ। आई सी, मैं समझ गया। यू शुड राइज अर्ली एंड गेट द बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठने के फ़ायदे उठाने चाहिए। वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग दोज बेनिफिट्स? क्या आप उन फ़ायदों की वजाहत करोगे? अब उमर क्या कहता है? इफ़ यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यू कैन टेक अ बाथ अर्ली एंड हैव ब्रेकफास्ट ऑन टाइम। अगर तुम सुबह जल्दी उठते हो तो तुम जल्दी नहा लोगे और वक्त पर नाश्ता करोगे। सो यू कैन गेट रेडी फॉर स्कूल एंड मेक इट ऑन टाइम।
اس طرح تم اسکول کے لیے وقت پر تیار ہوگے اور وقت پر پہنچ جاؤ گے. یس یو آر رائٹ. ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو. I will try to get up early tomorrow. میں کل وقت پر اٹھنے کی کوشش کروں گا. That's good. اچھی بات ہے. Thank you. See you later. شکریہ. بعد میں ملتے ہیں. Reading and critical thinking. A. Comprehension questions. 1. Answer the following questions. Question. Why was Umar awarded by the teacher? یعنی عمر کو ٹیچر نے ایوارڈ کیوں دیا تھا؟ Umar was awarded by the teacher because he had narrated an inspiring incident from the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi وآلہ وسلم. عمر کو ٹیچر نے انعام اس لیے دیا تھا کیونکہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایک انسپائرنگ واقعہ سنایا تھا. narrated کی جگہ آپ لفظ told بھی استعمال کر سکتے ہو اور انسپائرنگ کی جگہ موٹیویٹنگ ورڈ استعمال کر سکتے ہو. What did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi وآلہ وسلم do when he saw the boy crying? حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لڑکے کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم went to the child and inquired why he was crying. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہا تھا. When he came to know that he was an orphan, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ ایک یتیم تھا, he took him home, وہ ان کو گھر لے گئے, gave him new clothes, ان کو نئے کپڑے دیے, and they ate together, اور انہوں نے مل کر کھانا کھایا. What lesson do we learn from this incident? اس واقعے سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں؟ From this incident, we learn that we should help people who need help. اس انسیڈنٹ سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. Question. Share any other incident from the life of Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم when he showed love for children. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایسا کوئی اور واقعہ شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ جس میں انہوں نے بچوں کی طرف محبت دکھائی ہو. ایسے بہت سے واقعات ہیں لیکن ایک واقعہ یہ ہے. One day he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم noticed a young boy named Abu Umair looking sad. ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چھوٹا لڑکا جس کا نام عمیر تھا وہ افسردہ تھا. The Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم gently approached him and asked. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام سے اس بچے کے پاس گئے اور پوچھا, Oh Abu Umair, what happened to your little bird? اے ابو عمیر, تمہارے چھوٹے پرندے کو کیا ہوا ہے؟ The boy had a pet bird that had passed away. اس لڑکے کا ایک پرندہ تھا جو مر گیا تھا. And he was heartbroken. اور وہ بہت زیادہ افسردہ تھا یا اس کا دل ٹوٹ گیا تھا. Instead of ignoring his sadness, the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم comforted him in a light-hearted and affectionate way. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرم دلی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس بچے کو تسلی دی. He would often ask about the bird. وہ اکثر اس پرندے کے بارے میں پوچھتے تھے. And engage with Abu Umair to cheer him up. وہ اکثر اس سے اس پرندے کے بارے میں پوچھتے تھے اور ان کو خوش کرنے کے لیے باتوں میں الجھائے رکھتے تھے یا باتوں میں مصروف رکھتے تھے. Unscramble the given words and write the correct word for each digraph in each table. اب یہاں پہ کچھ ورڈز دیے گئے ہیں لیکن ان کے لیٹرز جو ہے وہ الٹ پلٹ لکھ کے گئے ہیں. آپ کو ان لیٹرز کو ترتیب دینی ہے اور نیچے جو ڈائیگراف دیے گئے ہیں ان کے سامنے لگا کر وہ ورڈ لکھنا ہے. ڈائیگراف کیا ہوتا ہے؟ ڈائیگراف ایسے دو حروف ہوتے ہیں جو ایک ہی آواز دیتے ہیں, جیسے کہ CH چھا کی آواز دیتا ہے, SH شا کی آواز دیتا ہے, WH وا کی آواز دیتا ہے, TH تھا یا ذا کی آواز دیتا ہے. CPOH سے جو ورڈ بنتا ہے وہ چھوپ ہے. KHAES سے جو ورڈ بنتا ہے وہ شیک ہے. WTAH سے جو لفظ بنتا ہے وہ وٹ ہے. WOHRT سے جو لفظ بنتا ہے وہ ورتھ ہے. OOHTP سے جو لفظ بنتا ہے وہ فوٹو ہے. GTRHI سے جو لفظ بنتا ہے وہ رائٹ ہے. NAIHIC سے جو لفظ بنتا ہے وہ چین ہے. POHS سے جو لفظ بنتا ہے وہ شاپ ہے.
ITWEH से जो लफ्ज़ बनता है वो वाइट है। HGARP से जो लफ्ज़ बनता है वो ग्राफ है। Diagraphs, trigraphs and silent letters. A digraph is a single sound which is represented by two letters. डायग्राफ एक ऐसा सिंगल साउंड होता है जिसे दो हरूफ मिलकर जाहिर करते हैं, जैसे कि TH से द की साउंड बनती है। A trigraph is a single sound which consists of three letters. ट्राइग्राफ एक सिंगल साउंड होता है जो 3 लेटर से मिलकर बनता है, जैसे किचन में TCH छा की आवाज देता है। We cannot pronounce silent letters when we say the word. हम साइलेंट लेटर्स को प्रोनाउंस नहीं करते जब हम वो लफ्ज़ बोलते हैं, बट दे आर देयर व्हेन वी राइट और स्पेल द वर्ड। लेकिन जब हम उस वर्ड को लिखते हैं या जब उसकी स्पेलिंग करते हैं तो वो हर्फ वहाँ पे मौजूद होता है। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ डायग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स एंड साइलेंट लेटर्स। Umar visited the Blue Mosque with his family. It was very grand and beautiful. Before he got there, 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 TH the की साउंड जाहिर करते हैं। He thought that the whole mosque would be blue in color. He was surprised when he saw it was not blue from the outside, it was grey. He was confused as to why it was called the Blue Mosque. Y, WH, वा की साउंड देते हैं, जबकि ये 2 लेटर्स है तो डायग्राफ है। They went inside. They, TH, the. All of a sudden, he saw so many shades of blue all around. Light blue, light. GH इस वर्ड में साइलेंट है। Dark blue, indigo and violet. They also watched its high ceiling. Watched, TCH छा की आवाज देते हैं, इसलिए ये ट्राइग्राफ है। High, GH साइलेंट है। It was so beautiful. Soon they heard the azan. They all said prayers. Umar and other children were very excited and took many photographs. PH, fur, और दूसरा भी PH है, fur. Look at the pictures given below. Complete the words in each picture using digraph and trigraph. Write a sentence to describe each picture in your notebook. नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, हमें इन पिक्चर्स को देखकर वो जो वर्ड है उसको पूरा करना है और उनमें डायग्राफ और ट्राइग्राफ की शनाख्त करनी है। पहला वर्ड है हैच, HATCH, हैच, TCH, ट्राइग्राफ है। दूसरा वर्ड है बियर्ड, EA, एयर, ये डायग्राफ है। तीसरा वर्ड है फाइट। अच्छा, यहाँ पे GH साइलेंट है। फोर्थ वर्ड है फेयर, नाशपाती को कहते हैं और EA जो है ये डायग्राफ है। फ्लाइट, अगेन ये GH जो है ये साइलेंट है लेकिन इन्होंने डायग्राफ में दिया है। किचन, TCH, ट्राइग्राफ है। अब अगर हम इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करना चाहे तो हैच, द एग्स विल हैच सून, जल्द ही अंडों से बच्चे निकल आएंगे। हैच, अंडों का टूट कर उनसे बच्चे निकलने के अमल को हैच कहते हैं। बियर्ड, मोस्ट मेन ग्रो बियर्ड, ज़्यादातर मर्द जो है उनके, ज़्यादातर मर्दों की दाढ़ी निकलती है। फाइट, वी शुड नॉट फाइट इन द क्लास। फेयर, फेयर इज माई फेवरेट फ्रूट। फ्लाइट, द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 9 PM। Kitchen, my mother is busy in the kitchen. Write 2 words with silent letters K, T and B each. K, knit, not. T, hustle, listen. B, doubt, debt. Debt कर्जे को कहते हैं और doubt शक को। Topic sentence and supporting details. Read the given paragraph and notice the use of topic sentence and supporting details. Most honest person. A simple paragraph comprises a group of sentences that develops a single main idea. The main idea of a paragraph is given in the topic sentence. Other sentences in the paragraph support the topic sentence. The truthfulness and honesty of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the beauty of his character.
People gave him the title of Sadiq, the truthful, and Al-Amin, the faithful. Everyone in Makkah addressed him by these titles. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی سب سے خوبصورت بات جو تھی وہ ان کی سچائی اور دیانتداری تھی. لوگوں نے ان کو صادق یعنی سچے اور امین یعنی امانت دار کے خطاب دیے تھے. Everyone in Makkah addressed him by these titles. مکہ کا ہر شخص ان کو ان خطابوں سے پکارتا تھا. Use the following mind map and write a paragraph on a tree plantation campaign. Use any 5 conjunctions in your paragraph. تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کے لیے یہ پیراگراف لکھ لیا ہے. Time to think. Read any incident from حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم life. Share it with your classmates. اس کا جواب بھی میں نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے اور آپ اس کو پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور یاد رکھیں. Aspects of language. Vocabulary. Read the given words with their meanings. Narrate. Tell. Tell یعنی بتانا. Inspiring, motivating یعنی ایسی کہانی یا ایسا واقعہ جو آپ میں جوش بھر دے. Orphan. A child whose parents are dead. ایسے بچہ جس کے والدین فوت ہو گئے ہو. Incident, an event, واقعہ. Naming, action and describing words. Read the given advertisement carefully. Find and write 2 naming, action and describing words each. Use them in your own sentences. Naming words جو ہیں وہ nouns ہوتے ہیں. Action words جو ہیں وہ verbs ہوتے ہیں. اور describing words جو ہیں وہ adjectives ہوتے ہیں. اب جو آپ کے سامنے اشتہار دیا گیا ہے ان میں سے آپ 2 ناؤنس 2 وربس اور 2 ایڈجیکٹیوز تلاش کر کے لکھیں اور ان کو جملوں میں استعمال کریں. نیمنگ ورڈز. اس میں ایک لفظ ہے کافی. آئی لو بلیک کافی. ٹیسٹ. دا ٹیسٹ آف دا ٹی واز نائس. ٹیسٹ ذائقہ. ایکشن ورڈز. انجوائے مزہ لینا. وی انجوائڈ آور ٹرپ ٹو سوات. ڈرنک پینا. آئی ڈرنک واٹر. ڈسکرائبنگ ورڈز. مور. مور جو ہے وہ مینی کی کمپیریٹیو ڈگری ہے. آئی نیڈ سم مور منی. مجھے کچھ مزید پیسوں کی ضرورت ہے. گڈ. ہی از اے گڈ فرینڈ. کاؤنٹیبل, انکاؤنٹیبل اینڈ کلیکٹیو ناؤنس. کاؤنٹیبل وہ ناؤنس ہوتے ہیں جن کو ہم گن سکتے ہیں, ان کے پلورلس ہوتے ہیں. انکاؤنٹیبل وہ ناؤنس ہوتے ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے اور ان کے پلورلس نہیں ہوتے. کلیکٹیو ناؤنس وہ ناؤنس ہوتے ہیں جو ایک ہی قسم کی کئی چیزوں کو جو ایک نام دیا جاتا ہے اسے کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں. مثال کے طور پر بہت سے کھلاڑیوں کے گروپ کو ٹیم کہتے ہیں. ریڈ دا ٹیکسٹ below. Look at the highlighted words. The words highlighted in red are countable nouns. The ones in blue are uncountable nouns. And the ones in green are collective nouns. Omar and his father went to the zoo. The weather was very pleasant. There, they saw many beautiful things and animals like bears, tigers, birds, flowers, swings, and colorful swarms of butterflies. First, they stopped at the lion's cage. The pack of lions roared loudly and ate its meal hurriedly. Next, they went to see the monkeys. There were 2 troops of monkeys. One of them was swinging quickly from tree to tree, and the other one was munching on bunches of bananas. They saw many other animals there. After an hour, they went to see the elephants having a wash. This was the most exciting experience of the day because the elephants shook water all over them. It was funny. Soon a group of men came to clear the area. The children enjoyed fresh air and had a lot of fun. Identify and underline the countable, uncountable, and collective nouns in the following sentences. Also write the noun types in the space provided. The herd of zebras ran across the fields, leaving behind a massive cloud of dust in the air. Herd of zebras and cloud of dust are collective nouns. There was no more water in the fish bowl. Uncountable noun, water. Grandpa's birthday cake had 10 big candles. Countable nouns, candles. Parents have endless love for their children. Love, uncountable noun.
Sidra brought a basket with juicy bunches of grapes. Bunches of grapes, collective noun. The Harry Potter series is not available on the bookshop. Harry Potter series, collective noun. Several paintings were exhibited in the art exhibition. Paintings, countable noun. The bakers baked a massive quantity of loaves of bread. Loaves of bread, collective noun है. The choir was given a huge round of applause. Round of applause, collective noun है. Articles. The article a is used before a noun starting with a consonant. The article n is used before a word starting with a vowel. Omer wrote a paragraph about his grandpa but forgot to put articles. Can you help him fill it in with articles? My grandpa is the most humble person in the world. He says his prayers on time and has a habit of distributing charity among the needy and the poor. From a stubborn child, he has transformed me into an obedient girl. I really enjoy spending time with him. We do different chores like baking, cleaning the kitchen, and watering the plants and flowers in our garden. He has bought me a small white kitten whom I named Lucy. I love taking care of her. Grandpa and I have built a pet house for Lucy. Adjectives की बहुत सी किस्में हैं. Read the given sentences and notice the types of adjectives. Adjective of color. Adjective of color describe what color something is. Adjective of color जो होता है वो किसी चीज़ को बयान करता है कि वो किस कलर का है. Umar is wearing brown shoes. Brown adjective of color है. Adjective of size. How big or small etc. something is. There is a big clock in Umar's room. Adjective of shape. Describe what shape something is. I have a square jewelry box. Adjective of quality. Describe the kind and quality of a noun. You should be kind and humble. Adjective of origin. Describe where something belongs to. Umar hoisted the Pakistani flag. Pakistani एक adjective of origin है. Adjective of quantity. Describe how much and how many. There were many students in the school. In the sentence below, identify the adjectives and write their types in the blanks provided. Alia made several attempts to download the file. Several, adjective of quantity. A gigantic snowball fell off the cliff. Gigantic, adjective of size. I always prefer Italian organo bread for sandwiches. Italian, adjective of origin. The designer launched cotton shirts for winter. Cotton, adjective of origin. A young cashier was preferred for the interview. Young, adjective of quality. My brother baked a scrumptious chicken lasagna. Scrumptious, adjective of quality. इसका मतलब है delicious. The shopkeeper served ice cream in a round bowl. Round, adjective of shape. Maple leaves display a beautiful view of autumn. Beautiful, adjective of quality. Rehan has 30 toy cars in his toy box. 30, adjective of quantity. The gardener was contented to see the bed of red roses. Red, adjective of color. इसके बाद राइटिंग है. राइटिंग में आपने मल्टी सैलेबल वर्ड्स के बारे में जानना है. सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सैलेबल क्या होता है. सिटी एक लफ्ज़ है जिसके आप दो टुकड़े कर सकते हैं और हर टुकड़े को आप प्रोनाउंस भी कर सकते हैं. CI को अलग और TY को अलग लिखिए. आप इन दोनों टुकड़ों को पढ़ सकते हैं, CT. लेकिन अगर आप DOG डॉग को ले लें तो डॉग को आप दो टुकड़े तो कर सकते हो, लेकिन फिर आप दोनों टुकड़ों को प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे. इसलिए डॉग जो है ये एक सैलेबल का बना हुआ लफ्ज़ है, जबकि सिटी दो सैलेबल का बना हुआ लफ्ज़ है. किसी लफ्ज़ में जब एक से ज़्यादा सैलेबल हो तो उसको मल्टी सैलेबल वर्ड कहते हैं. रीड एंड से द मल्टी सैलेबल वर्ड्स. मदर, इंस्पायरिंग, वंडरफुल, कंपैशनेट, डेमोन्स्ट्रेटेड. अगर आप देखें तो मदर में 2 सैलेबल्स है, इंस्पायरिंग में 3, वंडरफुल में 3, कंपैशनेट में 4 और डेमोन्स्ट्रेटेड में भी 4 सैलेबल्स है. इनके आगे सैलेबल्स को डिवाइड भी किया गया है, आप पढ़ सकते हैं.
Read the lesson again and find any five multi-syllable words. Write them in the given table and put a dot between syllables. Also write the number of syllables and syllable division. Grandma, grandma, ये 2 syllable word है. Incident, 3 syllable word है. Incident. Everyone, everyone, 3 syllable word है. Children, children, 2 syllable word है. Suddenly, 3 syllable word है. Suddenly. B. Creative writing. Now write a short paragraph about school rules and regulations. Remember to use correct capitalization, punctuation and spelling. अब आपको स्कूल रूल्स के बारे में 5 जुमले लिखने हैं. उनमें सही कैपिटलाइजेशन करनी है, उनकी स्पेलिंग करेक्ट लिखनी है और उन पे पंक्चुएशन भी लगानी है. I read at Avicenna Model School and College Dargay. It's a huge school with a huge and attractive building. There are some rules that keep our school organized and peaceful. Some of the rules are as follow. Students and teachers should reach school on time. Students must wear proper school uniform. Students must take all their classes. Students must complete all their assignments. Everyone inside the school must speak Urdu and English. Students must appear in all their term tests physically. Write meaningful sentences of your own using correct capitalization, punctuation, and spellings. When I met Alia for the first time, I thought she's a poor girl, but she was rich. Swat is a beautiful place in the north of Pakistan. Karachi is a big city with many industries. It is a very populated city. There are many historical places in Lahore. Read the third paragraph of the lesson carefully. Write its topic sentence and supporting details in your notebook. Also write its main idea in your own words. Main idea. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam was always kind to children. Topic sentence. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam went to the child and sat next to him on the side of the street. Supporting details. He patted him on the back and inquired why he was crying. The boy told him that he was an orphan and he had no new clothes and nothing to eat.